Good morning all. So today we will start with pressure exerted by छोड़ी क्या शुरू था exerted by liquid column. सर माइक दी नंदू सर माइक दी नंदी So today we start with pressure exerted by a liquid column. Suppose we will take one liquid column. Okay, here हमारा liquid अच्छी, and this is the base of the container in which the liquid is, and this will be pressure exerted on the liquid column. Okay, and this is my height of the liquid column h, and this is the liquid weight. Ready our कौन हो जी? Now consider a vessel of height h, okay, and a cross sectional area filled with liquid. Consider a vessel of liquid. Consider a vessel of liquid of height h, and containing liquid of density rho. तो एटा माने कंटेनर लेबी कंटेनर रे किसी लिक्विड अछि तो लिक्विड रहला माने लिक्विड रो किसी हाइट रहबो. ओके, सो द कंटेनर हैव सम लिक्विड, सो लिक्विड जेतो रहला तार सम हाइट रहला तो हाइट सहित लिक्विड जो नै छै तार किछि डेंसिटी दिबो. So the liquid will have some density. So liquid of density rho. Now the weight of the liquid column. Okay. The weight of the liquid column. So liquid column में suppose weight. So weight will be downward always. So that is W. So weight of the liquid column. Weight of the liquid column. लिक्विड कलम रे जो वेट से कौन करियो, इट विल एक्सर्ट ए डाउनवर्ड थ्रस्ट, इट विल एक्सर्ट ए डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल्स. सो दिस विल एक्सर्ट ए थ्रस्ट डाउनवर्ड. सब बड़े वेट टा कोठी एक्ट करियो, जो भी बॉडी रो वेट हो सब बड़े बॉडी वेट कोन डाउनवर्ड एक्ट करियो. सो दिस वेट ऑफ द लिक्विड कलम और थ्रस्ट acts downward. Okay, so the thrust will act downward. So downward जेहेतु act करियो तुम्हारा कौन, it will always towards down, and the liquid will exert certain pressure. Okay, and the liquid will exert pressure. तो मैं कौन करो गोटे भेसल ले लो, भेसल ले किछि लिक्विड ले लो. सो जे लिक्विड रे किछि हाइट थिबो फ्रॉम द बेस ऑफ द लिक्विड, बेस रो लिक्विड रो हाइट ठीक है, सेटा तुमे एज ले लो, एंड लिक्विड पाई किछि तमर वेट पडिबो. सो जो वेट ता हला कोन mg, लिक्विड पाई जो वेट ता पडिबो दैट वेट इज mg. सो दिस w इक्वल टू mg, एंड दिस ड्यू टू दिस लिक्विड कलम. ओके, सो से जो वेट ता पडिला हम से वेट ता को हम पकड़ी the thrust. So this thrust of the liquid, okay, is equivalent to the liquid pressure exerted by the liquid. Okay, next हमें जाने चलती density of the liquid rho, which is density is equivalent to mass by volume, mass by volume. So mass of the liquid कितना हो, mass of the liquid
mass of liquid is equal to density into volume, density into volume. So density is rho and volume is V. So mass of the liquid you can write as rho V. Okay, mass of the liquid you can write as rho V. Next, weight of the liquid column कितना हो? Weight of liquid column. Liquid column ना weight. Liquid column जब तक तुम्हें liquid ना हो तार weight कितना है? So this will be mass of the liquid into G. कौन थे? W equal to mg. So W equal to mg है ना? m टा कौन? Mass of the liquid into G. Now mass of the liquid will be equal to density into volume. Mass of the liquid will be equal to density into volume into G. Density into volume into G. Now volume of the liquid we can write. Okay, volume of the liquid. So volume को लिख करेंगे area into height, volume into density into G. Volume को लिख करेंगे area of the liquid. इतनी तो मैं liquid नहीं जता area into height ah into density rho into G. So you will get ah rho G. So the mass of the this weight of the liquid column, you will get weight of liquid column. So generally कौन होगी? Now weight सब बड़ा due to gravity the weight will act always downward. So gravitational force में तुम्हारे जेहेतु weight downward लागुची, so weight कितना होची mg. So weight is mg. So m टा here कौन? ना liquid रो mass. तो mass of the liquid हम जान ले mass will be always density into volume. ना हमें ताको लिखे थे volume into density. Density into volume जा volume into density से तो volume into density ले volume और कितना हो? Volume is length of cube. So length of cube है ना माने area L square into length height. इधर मुझे भी area into height. Area into height. This will be L square into L. So the dimension L cube. So volume रो dimension कौन? Area into H. So you will take area into H, then I will get volume. जो तुम्हें बार करचो volume of a cube, length into breadth into height. Similarly, length into breadth तुम्हें पाई हो जाए area and height है that will be H. Okay. Volume will be area into height into density la rho into G. So AH rho G. You will get the weight of the liquid column as AH rho G. यदि तुम्हें किसी लिक्विड नौचो गोटे कलम रे तन तार ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी तार वेट पडुची तळकू तो वेट केते पडुची ना वेट पडुची mg m टा कोन एटी m टा ना मास ऑफ द लिक्विड कलम g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ग्रेविटी पे जो तळकू तुमरा डाउनवर्ड फोर्स लागुची तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पडला दैट मास ऑफ द लिक्विड को लिख देली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम the density into volume को I can write volume into density so volume formula है h area into height density is rho and g. Next thing I will here the pressure exerted by the liquid column on the bottom. The pressure exerted by the liquid column on the bottom. Okay. Liquid column bottom ऊपर केते pressure पकोची तो केते pressure पकोची pressure is always thrust per unit area. Thrust per unit area. So it is thrust for केते पड़ुची that is W per unit area. तो W जोटा हम बाहर कल केते बाहरला AH rho G. तो thrust per unit area AH rho G divided by area. Okay. So pressure exerted will be thrust per unit area. So the bottom में जतिक तुम्हें liquid नहीं थी वो liquid ऊपर कौन पड़ेगा
द थ्रस्ट केते पडुची पर यूनिट एरिया रे मतलब कोइ परबी द प्रेशर एक्सर्टेड तो प्रेशर एक्सर्टेड विल बी थ्रस्ट है ना कोन वेट ऑफ द लिक्विड कलम डिवाइडेड बाय एरिया सो वेट ऑफ द लिक्विड कलम बाहर पडछि केते h रोजी डिवाइडेड बाय एरिया सो एटी मोर h रोजी बाय a केते आसो a कटि जो सो 1 a will get cancelled so I will get h रोजी so pressure exerted on the liquid column mobile केते h rho g pressure exerted on the liquid column so एठी मु दुटा जिंस ऑब्जर्व करी ना जो pressure exerted by the liquid column okay pressure exerted by the liquid column this depends on pressure exerted by the liquid column depends on क्या ऊपर डिपेंड करूची the height of the liquid column height of the liquid column and the density of the liquid you have taken the density of the liquid you have taken the density of liquid so it depends on two things one thing is the height of the liquid column and the other thing is the density of the liquid column okay this is our this pressure exerted by the liquid column this is the expression for the pressure exerted the pressure exerted from the data file the pressure is directly proportional to height of the liquid column and pressure is directly proportional to density of the liquid column next in effect of gravity on the fluid pressure effect of the gravity I think you have understood this okay बुझे क्यों next is effect of gravity on the fluid pressure effect of gravity on fluid pressure so the first part is variation of the liquid pressure with depth variation of the liquid pressure variation of liquid pressure with depth so depth सह केमते liquid pressure vary करूछ सेटा हम जाने तो से बात में गोटे लिक्विड कलम नबो तो सपोज दिस इज माय तो एठी दीटा प्रकार पडियो ऊपर गोटे प्रेशर पडियो तळे गोटे पडियो सपोज ऊपर प्रेशर मोर पडुची P1 तळ प्रेशर टा कुआडू पडियो ऊपर प्रेशर टा मोर पडची P1 एमती पडला तळ प्रेशर शुड बी ऑलवेज डाउन ओके तळटा केमती पडियो डाउन दिस शुड बी P2 फर्स्ट जिनस है प्रेशर में जानी गली प्रेशर या ऊपर पड़ला P1 तळे पड़ला P2 ड्यू टू द लिक्विड कलम ऊपर जो पड़ला अप थ्रस्ट तळे पड़ला मोर डाउनवर्ड फोर्स जोटा पड़ला प्रेशर दैट विल बी P2 नेक्स्ट लैंड वेट ऑफ द एयर हाइट रहला h लिक्विड कंटेनर नो तो यार वेट पड़ियो पड़ द वेट विल बी डाउनवर्ड सो इट मोर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम के तो फर्स्ट जानना एठी कोन नै जल्दी हमें so we have taken on this liquid देखो एटी कोन अछि फर्स्ट यू तो एटी हम नहीं चलती कंसीडर ए लिक्विड एट रेस्ट इन ए कंटेनर लिक्विड को कोन नहीं चलती ना द लिक्विड इज रेस्ट लिक्विड कंटेनर रे रेस्ट रे अछि ओके फर्स्ट जिंस एटी नेक्स्ट होला द लिक्विड प्रेशर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स तो हमें जो पढ़िला कोन पास्कल लो इस पे लिक्विड प्रेशर ऑलवेज सेम the P1 हो कि P2 हो कि P3 हो at any point you will take this will be equal to P okay तो pressure at any point of the liquid एठी बाहर करो एठी बाहर करो एठी बाहर करो एठी बाहर करो किबा एठी बाहर करो लिक्विड प्रेशर सब जगह पर समान रहबो so P1 equal to P2 equal to P3 equal to
So at all point the liquid pressure will be same. Next inshallah imagine a cylindrical element. तो cylindrical element तो मैंने जो इटा imagine a cylindrical एटा ना तो liquid अभी तक से liquid है तो imagine a cylindrical element. Cylindrical element रो the cross sectional area है ला A and the height है ला H. ये cross sectional area कितने? Cross sectional area is A and the height is H. Okay. Height of the cylindrical section, height of the cylindrical section is H and its cross sectional area is A. Next, let P1 and P2 of the liquid pressure, the P1 and P2 liquid pressure at top and P2 is liquid pressure at bottom. P2 is liquid pressure at bottom. Liquid pressure at bottom. Top रे पड़ियो गोटे P1 and bottom रे पड़ियो गोटे P2. तो according to this question हमने कहलो P1 ऊपर एमती पड़ुची ऊपर आडू P2 पड़ुची तळ आडू ओके. तो as this liquid cylinder is rest the resultant horizontal force on this should be 0 as this liquid column is at rest. Liquid column is at rest. The resultant horizontal force should be 0. Should be 0. So the resultant horizontal force on it should be 0. The resultant horizontal force सब बड़ी यहाँ पे 0 आसो. तो ता माने कौन? ता माने हला. तो यार वो force आगे बाहर कर दूँगी ताकि तुम लोग बोलो. Force first कौन पढ़ूँगी? The force due to the liquid pressure on the top. Force due to the liquid pressure on top. The top रे liquid pressure हमारे कौन पड़ेगा P1 ओके. Liquid pressure top रे कौन पड़ेगा so pressure liquid force due to the liquid pressure. So this is F1. तो F1 कितना है? This liquid pressure P1 into area. So this is my first equation. So next time by the force due to the liquid pressure on the bottom. Force due to the liquid pressure on bottom. Okay. The bottom is so F2 is equal to P2 times area. Okay. P2 times area. The next inshallah we are कौन liquid column लोड weight पड़ियो. Weight of the liquid column. Weight of the liquid column. The liquid column of weight पड़ियो mg. So W equal to mg. It acts downward. It acts downward. Okay. So according to this, तो से जो liquid का जो total over आज हम consider करें, तो हमारे कौन कहाँ से हो ना this P2 force due to this liquid, so I can write this as P2A plus what or this force the equation consider करें. This will be my force F1 plus W will be equal to F2. This is my F2 and this is my F1. So F1 is acting downward and W. So F1 plus W will be equal to F2. So F1 मोरेटी कितने हो? F1 of the liquid. Suppose I am writing this. This equation can be also of this for F2 minus F1 will be equal to W. Now W टा हम कितने बाहर पड़ती है? या पूर्वरु W बाहर पड़ती.
W is mg m है कौन m है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सो डेंसिटी है हम बाहर करथिले केते वॉल्यूम बाहर करथिले h देन डेंसिटी रो इनटू g सो w हम बाहर करथिले h रो g सो f2 minus f1 will be equal to ah rho g okay so f2 minus f1 over value h rho g now second answer जो F2 हमें बाहर कर दिले फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर ऑन टॉप ऊपर जो पड़ितला सो दिस विल बी F2 फर्स्ट में F2 नोच F2 है हमर P2 है सो F2 इज P2 है एंड F1 इज P1 है so that I will substitute in this equation so this is my equation number 1 so I will substitute this as P2 है minus P1 है will be equal to ah rho g now take common this area you will get P2 minus P1 will be equal to ah rho g the area both side रे अछि so I will got cancel this area so I will get P2 minus P1 will be h rho g so pressure difference will be s rho g okay suppose the height of this liquid column is 0 the height is nil negligible suppose this liquid column is of negligible height suppose this liquid column is of negligible height नेग्लिजिबल हाइट के मोर बेनिफिट कोन ना तो एठी हमरो जो पास्कल लो हिसाब रे कोन P2 P1 this will be height 0 this will be 0 so P2 will be equal to P1 so pressure at every point of the liquid column pressure at every point of this force due to this okay so pressure at every point of the liquid column will be same so which is our Pascal law pressure at every point of the liquid column every point of the liquid column will be the same okay pressure due to this liquid column will be the same so तमे जे लिक्विड कलम कोले नो जो लिक्विड कलम के तमे यदि दिस इज द लिक्विड कलम कंटेनर रे जो देन प्रेशर एठी जति जो प्रेशर P1 बाहर कर एठी जति P2 बाहर कर एठी P3 बाहर कर एठी P4 बाहर कर एठी P5 बाहर कर P6 बाहर कर so all pressure on this liquid column will be same that means P1 will be equal to P2 equal to P3 equal to P4 equal to P5 equal to P6 and this also this will be equal to P so all the pressure on this liquid column will be same so eta ki hochi na it will say the Pascal's law hisab re amara achi liquid column at pressure at every point तो यदि मोर एटमॉस्फेयर प्रेशर को P लिए एंड P2 को P लिए P2 को यदि P लिए एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PA लिए और कौन आसो वैल्यू I will get P minus PA is equal to H rho g P minus PA is equal to H rho g if P2 I have taken P and P I have taken as PA so pressure मोर केते पड़े आसो so this pressure will be P will be equal to atmospheric pressure PA plus H rho g this is an important formula so the pressure okay will be the pressure exerted by the atmosphere on the substance or by the atmosphere on the liquid column plus H rho g okay तो general pressure यदि पचरा है तो what substance पे कितने पड़ियो and this general pressure will be PA plus H rho g general atmospheric pressure पे कितने पड़ुची and हमारा जनरल जो H rho g में बाहर करथिले कोन प्रेशर जो में बाहर करथिले एक्सप्रेशन प्रेशर एक्सप्रेशन जोटा बाहर करथिले डिफरेंस इन प्रेशर so this will be H rho g so this will be the
करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए लिक्विड कलम। तो एठी हमें ऑब्जर्व करले दिटा आंसर ना कोन ना द लिक्विड कलम पी का ऊपर डिपेंड करूछ। ओके ना फर्स्ट आंसर लिक्विड कलम रा प्रेशर हमें जेतरा मेजर करे लिक्विड कलम रा प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड कलम P1 हो कि P2 हो कि P3 हो देखिले हमें सब जगह सेम आछे। दिस इज एन इंपोर्टेंट पॉइंट। ना प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड फ्लूइड भीतर तुम यदि प्रेशर एनी पॉइंट रे भी नबो तो दिस डिपेंड्स ऑन द डेप्थ h। एठी बाहर करो किबा एठी बाहर करो किबा एठी बाहर करो किबा एठी बाहर करो फ्लूइड भीतर तो से का ऊपर डिपेंड करिवो इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन h ऊपर डिपेंड करिवो। तो देखो ना प्रेशर डिपेंड करूछ का ऊपर h ऊपर। नेक्स्ट द एक्सेस प्रेशर P minus PA this excess pressure this will depend on the density of the liquid। okay and P minus PA excess pressure को हम कहूचे gauge pressure। okay this P minus PA एटा है excess pressure this is known as the gauge pressure। gauge pressure so this excess pressure of the liquid is known as gauge pressure। And finally the pressure does not depend on the cross sectional area and base area। the pressure does not depend on the cross sectional area or base area or base area। okay so it does not depend on the cross sectional area or base area का पर डिपेंड करिवो ना। okay so this will be our dependence of this variation of the pressure with altitude variation of the pressure with altitude or depth। so we will do one problem। okay हाँ ग्रेविटी रे जे इफेक्ट होगा P2 minus P1 हमर सब केते आसे h rho g P2 minus P1 is h rho g। तो ग्रेविटी जे 0 आएगा if this we neglect this effect of gravity तो g will be 0 so P2 will be equal to P1। यदि हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं तो प्रेशर सब समान आसे। this is one concept so we will do problem with this concept or we will do extend our problem using this concept। ये concept को यूज करके problem और करिए। what is the pressure on a swimmer 10 meter below। what is the pressure on a swimmer what is the pressure on a swimmer 10 meter below swimmer ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा 10 meter below this surface of lake below the surface of lake। ओके एटा बाहर करिए। तो या पे मोर कौन दरकार पापा जेन से फास्ट रिक्वायरमेंट सेडा जानो तो हाइट मते दे दी छी कोन दे दी छी हाइट दे दी छी 10 मीटर। या मोर रिक्वायरमेंट दरकार मोर डेंसिटी दरकार डेंसिटी वाटर रे केते वाटर डेंसिटी रे 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एटा तुमको मन रखे पड़ियो h रो एंड g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एबे में बाहर को करियो प्रेशर बाहर करियो। ओके सो प्रेशर में तुमको कह दिली P इक्वल टू PA प्लस h rho g so this is the atmospheric pressure। so atmospheric pressure सब बड़ा है 1 into 10 to the power 3 1 into 10 to the power 3 no 5 1 into 10 to the power 5 atmospheric pressure is this much plus height of this liquid column 10 rho density is 10 to the power 3 and g is approximately 10 or 9.8 you can take anything 9.8 you have taken so this will be 1 into 10 to the power 5 plus and this will be 0.98 into 10 to the power 5 so this will be 1.98 into 10 to the power 5 so 1.98 is approximately 4 into 10 to the power 5 so the pressure on this liquid column will be 2 into 10 to the power 5 so what is the pressure on a swimmer तो swimmer ऊपर तो तार कितना प्रेशर पड़ियो 2 into 10 to the power 5
पास्कल into 10 to the power 5 पास्कल तो फार्मूला जानते मन रख पड़े कौन एटमॉस्फेयर केते प्रेशर पकोछि सुमन पर एंड इट्स ओरिजिनल h rho g ड्यू टू दिस डेप्थ पे तार केते प्रेशर पड़ुछि से दुटा जिंस मन रख मैं बात कर देते नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल the density of the atmosphere at sea level okay sea level the density of atmosphere kete is 1.29 kg per meter cube is 1.29 kg per meter cube okay so assume that it does not change with altitude assume that it does not change with altitude does not change with altitude से तो change होनी तो मैं assume करियो and then how high would the atmosphere extend then how high would the atmosphere extend now this is our question take g equal to 9.8 so এটা তুমি পচারছি g 9.8 নাও so g को हमें कौन होगा 9.8 so एठी में रो कौन अछि कौन गिवन दिस रे लिख दो तो रो दे दीजिए density 1.29 kg per meter cube and another given कौन दे सकूं atmosphere extent g दे दीजिए 9.8 okay it does not change with the altitude and the PA atmospheric pressure मतलब रखना पड़ेगा 1.01 into 10 to the power 5 pascal atmospheric pressure okay এটা मतलब रखियो पड़ियो तो आज बुझान छी atmospheric pressure PA equal to कितने h rho g atmospheric pressure is PA equal to h rho g so एठी हम पचारि छी कोन अदर assume that it does not change with altitude then how height so it is at height so height will be PA by rho g okay मुझे height पचारि छी height will be PA by rho g कितने 1.01 into 10 to the power 5 pascal divided by rho g density कितने अछि density is 1.29 kg per meter cube into g and 9.8 so you will calculate this is 1.01 divided by this will be approximately this will be 12.7 okay into 10 to the power 5 so this will be you will calculate this will approximately 0.00 0.007981 so this will be 0.007981 so this will be 7981 meter so this will be 7981 so this will be 8 kilometer so the answer will be in 8 kilometer okay so thank you everyone so this is our part of this the due to this liquid column some height at the altitude upre the liquid column ra kete pressure पड़ुछि how much pressure is exerted by the liquid column due to its some height okay and pressure this atmospheric pressure due to this atmospheric pressure liquid column upre pressure kete पड़ुछि and originally liquid column ra height पाई तार kete pressure पड़ुछि एटा हम बाहर कले h rho g and liquid column ra atmospheric pressure kete पड़ुछि liquid column upre that is PA so P will be equal to some PA that is atmospheric pressure plus यदि तुम्हारे पड़ुछि this कौन h rho g to this side so it will be the expression so thank you everyone